Hello everyone, warm welcome. So the wait is over, the most awaited session is live now, and the name of this session is Financial Stability Report. So we all know that this report is really very important for your examination point of view because every year many questions are expected and asked from this report itself. So today we will be discussing in much detail what is this Financial Stability Report. We will be discussing in detail what all chapters have been mentioned in the report, and then slowly and steadily we will be moving ahead and will try to cover this report in that much depth that we will be in a position to answer the questions in the examination for sure. Is it fine, guys? So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion without any further delay. May I have a reply in the comment section so that we can begin the discussion without any further delay. पता है जब भी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आउट होती हैं, I always get the message कि सर कितना याद करें. It's a report of around 171 pages. अगर आप PDF चेक करेंगे RBI की वेबसाइट पर तो ये लगभग 170-75 पेजेस की PDF है. एंड आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन कि सर व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट नॉट टू रिमेंबर, कैसे होगा क्या नहीं होगा. तो उसका एक पहले एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए. यू मस्ट हैव दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस. तो जब भी कभी वी टॉक अबाउट द फाइनेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स और द रिपोर्ट्स विच आर प्रेजेंटेड बाय RBI, majorly the reports they talk about the status of, majorly these reports they talk about the status of financial sector of the country. The moment I say the status of financial sector of the country, it basically means how well the financial sector is doing today, what it has done in the past, what is the current scenario and what we can expect in the future. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? The problem is if all the datas are same, that means if all the datas which are mentioned in different reports, if they are same, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन sometimes we find out that these datas they have taken from different sources and they are different. For example, RBI ने कहा कि इंडिया की GDP growth estimate है 6.5%, but World Bank and IMF का GDP growth estimates is not same as that of RBI for India. So in सारी situations में you need to identify this point very clearly कि actually में ये जो reports हैं they only discuss about the financial sector status, जिसमें past data है which is common everywhere, then the current data which is almost same everywhere, but the future जो estimates हैं, जो aspects हैं, they may differ from report to report. तो अगर आप इतना point अपने दिमाग में clear रखेंगे, clarity रखेंगे, तो I'm pretty sure you will be in a position to understand most of the reports pretty easily. अगला पॉइंट जो यहां पे आता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं अगले पॉइंट पे आपके लिए बात करूं तो अगला पॉइंट जो यहां पे आया वो क्या, अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो एज द नेम सजेस्ट व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? सर ये बताती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी of the country, क्योंकि it is presented by RBI, but it even talks about the financial stability at the global level. So this report is basically categorized into three aspects. The first aspect is this report discuss the risk associated with global as well as domestic market. So सबसे पहले रिस्क को डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या रिस्क हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं ऑन द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मार्केट. Then उसके बाद with respect to this risk we check out the readiness. With respect to this risk we check out the readiness of our financial sector. RBI comes up with the answer कि जो हमारा financial sector है वो कितना ready है to handle this particular risk. Along with this ये जो readiness है that is also identified with the help of stress test, और stress test के अलावा the status of the financial sector gives us the aspect that what is the readiness of our financial sector. Moving on to the last part is the third part of this particular report, and the third part of this particular report, it basically talks about that what are the regulatory initiatives taken
कि भैया पुराने टाइम में क्या क्या रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सो दैट जिसकी वजह से आज का जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का स्टेटस है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग और सो वीक। अगर वीक है तो क्या क्या चेंजेस और लेने होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट is the financial stability report is the financial health report card, financial health report card of the country, जिसमें यह भी बताया जाता है कि आपने कैसे परफॉर्म किया, क्या रिस्क अभी फ्यूचर में आपके ऊपर है और आप कितने कैपेबल हैं उन रिस्क को हैंडल करने के लिए, और क्या क्या चेंजेस पास्ट में किए गए और क्या क्या चेंजेस फ्यूचर में किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द करंट सिनेरियो। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर। Yes, that is absolutely fine, Siddhant. If you are following this part, it will help you a lot in your GD part, for sure, for sure. ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? स्टार्ट करें डिस्कशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन with the very first point, that is what do you understand by the word financial stability report. I have already explained you, but now I will be discussing it in a more technical manner. So financial stability report, it's a biannual report. Biannual report मतलब ये 2 साल, एक साल में 2 बार प्रेजेंट की जाती है। एक बार ये प्रेजेंट की जाती है in the month of generally in the month of June, and the other presentation is done in the month of December. तो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी that was in December 2024. अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई है that is in January 2025. RBI basically assess the health, soundness and risk in the Indian financial system, and it provides a holistic view. What is the status of the banks, NBFCs, financial market, payment system, as well as the macro financial risk on the economy, which include the risk on the global economy as well as risk on the domestic economy. So as I said, financial stability report, it act as a health checkup. It act as a health checkup for the financial system, providing early warnings, and with the help of these early warnings, proactive actions, measures can be taken by RBI in order to avoid the tough situations and become resilient, or to have a robust and resilient financial landscape. समझ आई ये बात कि सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना सिर्फ और सिर्फ इसका काम फाइनेंशियल स्टेटस को बताना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इट मेक्स और इट हेल्प्स द गवर्नमेंट, RBI and the other authorities pre-ready to take the proactive measures in order to avoid any kind of financial crisis in the near future. ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा कि सर ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इट इज क्रिएटेड बाय नन अदर देन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज RBI. सो रिमेंबर दैट इट इज प्रिपेयर्ड by Reserve Bank of India in consultation with the subcommittee of the Financial Stability and Development Council, which includes, तो इसमें क्या क्या है ध्यान रखिएगा कि सर ये जो रिपोर्ट है, it is undoubtedly prepared by RBI in consultation with the subcommittee of Financial Stability and Development Council. तो ये Financial Stability and Development Council आखिरकार क्या है? Let's try to understand this point first. So Financial Stability and Development Council, it has been constituted by Government of India on 30th of December 2010, which is chaired by the Union Finance Minister. It is chaired by the Union Finance Minister. और जब भी कभी हम इसकी बात करते हैं, whenever we talk about this FSDC, it is basically an organization, or it is basically a council which is responsible to collect the data related to the financial status of the economy, and along with the data, it is responsible to collect information not only from one of the authority, not only from one of the regulator, rather it collects the data from, along with RBI, data of SEBI, as well as IRDAI, PFRDA, and even the data from the Ministry of Finance is also utilized. And with the help of this entire data,
finally RBI prepares the financial stability report. With the help of this data, RBI finally prepares the financial stability report. और ये जो financial stability report है, as I said, this report is not created. This report is not created only for, or this report is not created on annual basis. Rather, this report is created twice in a year. तो पहले जो रिपोर्ट आई थी दैट वाज आउट इन दिसंबर, अब जो रिपोर्ट आई है दैट हैज बीन आउट इन मंथ ऑफ जून. ठीक है. अब यहां पे अगर एक हमसे कोई पूछे ना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इस काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है? सर, इस काउंसिल के जो चेयरमैन है दैट इज नन अदर देन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट द मेंबर्स इंक्लूड द गवर्नर, द फाइनेंस सेक्रेटरी, members include the chief economic advisor, chairman of SEBI, chairman of IRDI, chairman of PFRDA. They all are the members. They all are the members of this particular organization, which is mentioned on your screen, that is known as FSDC. यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगली बार अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज FSDC, वी कैन आंसर इट. सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द सब कमेटी? सर, द सब कमेटी is chaired by, ये जो सब कमेटी है इसके चेयरमैन है none other than the governor of RBI. Under the chairmanship of governor of RBI, this particular organization is being, or this particular subcommittee is being operating. And यहाँ पे भी अगर हम बात करें, the main agenda of this committee is also to collect the data from different financial institutes, and then that collective data is being utilized for the creation of reports like financial stability and all. ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? If everything is fine, just give me yes sir, so that I can move on to the next point. If it is clear, just give me yes sir, so that I can move on to the next point. ओके. अब पॉइंट आता है कि सर जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, डायरेक्टली मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करना शुरू कर दूं, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, यू ऑल नो दैट. तो मैं थोड़ा सा तो समय आपका जरूर लूंगा और इसमें मैं अब आगे बढ़ूंगा और अगले पॉइंट पर मैं डिस्कशन जो करूंगा, अगले पॉइंट पे मैं जो डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन होगी बेसिकली द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. सबसे पहला पॉइंट कि सर इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस of presenting this report. अगर मैं बात करूं the purpose of presenting this particular report, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उस क्वेश्चन का आंसर है कि सर इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है in order to assess how much our financial segment or the financial sector is stable. It helps us to monitor the capacity of the financial institute कि वो कितने capable है to withstand in front of the economic shocks. And lastly, it helps us to understand कि क्या क्या policies introduce की गई in the past or what all policies are need to be introduced in the future in order to manage the financial system. Then it is responsible for creating up a transparency and communication. कैसे? So for example, financial stability report, it helps us to understand the financial status of our economy or the financial status or the status of our financial sector, which will help the individuals like you and me to understand कि how well our financial sector is performing so that we can take wise decisions. Simple. We can take very wise decisions while making the investment. अब मान लो आपको इन्वेस्ट करना है और आपको पता है कि इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देन यू विल टेक अ वाइज डिसीजन. सो इट क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट इज मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी. सो इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट insights for the macro prudential policies, that is the policies which are designed to ensure stability. तो जो भी पिछले दिनों में पॉलिसीज बनाई गई उन पॉलिसीज ने कैसे काम किया, how well they have performed, that understanding is also provided to you with the help of financial stability report. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि कौन कौन से एरियाज पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में डेटा शेयर किया जाता है, या फिर आने वाले अगले 1-1.5 घंटे में हम कौन कौन से एरियाज को देखेंगे. तो सबसे पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, दैट इज ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक. इसका मतलब क्या सर? इट इज बेसिकली द स्टेटस ऑफ global economy and domestic economy. Second point is assessment of the financial institutions, that how well the banks are performing, what is the CAR, capital adequacy ratio of the banks, overall
capital adequacy ratio in a composite manner for the banking sector? What are the NPA values, gross NPA, net NPAs? What is the profitability scenario of a bank? What is the result of stress test? ये stress test का मतलब क्या है? So let's suppose RBI conduct a stress test on the banking sector, और ये stress test में RBI ये check करना चाहता है कि if in the near future we may have another situation like COVID-19, do our banks capable enough to stand strong in front of that stress? If they pass, that means financial sector is performing well, and if they fail, then RBI needs to take certain corrective measures in order to avoid actual failure at the time of actual stress. फिर NBFCs के बारे में, what is the liquidity with the NBFCs, what is the leverage with the NBFCs, then what is the status of insurance as well as pension sector of the economy. Then in this particular report, this report basically monitors different types of risk, which include credit risk on the financial sector, liquidity risk, cyber risk, market risk, operational risk, external shocks, that means external shocks like geopolitical tensions or trade war or trade tariff war, then domestic challenges, that could be decrease in private consumption due to increase in taxes, that is domestic challenge, then technological risk, and the most important one which is in news these days, that is climate related risk. अगर आपको याद होगा, अब तो banks ने climate related risk को एक aspect बना लिया है while calculating the risk on a particular lending. For example, if bank is giving a loan, तो बैंक ये भी assess कर रहा है कि climate change की वजह से क्या probability है that my loan will go into NPA. So that is a new intervention which has been done. Last but not the least is systematic risk. What is systematic risk? So it is a scenario where all the sectors they come to standstill because of an unavoidable, undiversifiable, unpredictable scenarios like COVID-19. तो COVID-19 types systematic risk related survey किया जाता है, and in this survey we check the public confidence, that how much public is confident that how Indian banks or Indian sector will stand strong during the systematic risk, and even the public confidence related to the global economy is also recorded, and on the basis of public perspective as well as the financial status perspective, depending upon the different data points recorded by the Financial Stability Report, this systematic risk survey results are discussed. So survey is basically the data which is shared by the public confidence, but while the public confidence data is shared, then there are certain supporting points related to the or given on the basis of the related status points which are given on the basis of the data we have for the global or domestic financial sector. Think done. Moving on to the next point. The fourth point which is important is, as I discussed, stress test. So RBI stimulates, creates adverse economic scenarios like GDP slowdown or market crash to check how banks and NBFCs they are going to operate or they are going to handle that stress period. So this shows how resilient, how capable Indian financial sector is to measure, to handle or to absorb the shocks. Financial market trends are also witnessed where we check equity market volatility. Financial Stability Report also talks about the bond yield. It talks about currency management. It checks out the capital flows, FPI and FD. अब आप सोच रहे होंगे कि recently हमने RBI के नोटिफिकेशंस पढ़े थे, मास्टर नोटिफिकेशंस पढ़े थे, प्रेस रिलीज पढ़े थे, जिसमें मैंने बात की थी आपसे नेट इंडिया इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, याद होगा. Then I discussed with you the balance of payment status of the country. I discussed with you the external debt on the country. So all these data which have been shared separately, now the same data will be presented in the Financial Stability Report as well. तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कुछ बहुत नई चीजें आने वाली नहीं है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, चाहे फिर वो आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हो या IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो या RBI की कोई पब्लिकेशन पढ़ी हो. उन्हीं सारे पब्लिकेशंस को, उन्हीं सारे डेटास को कलेक्ट करके उन्हें इंप्लीमेंट करके उनका एप्लीकेशन देखा गया कि हाउ स्टेबल द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आपको कुछ ज्यादा नया नहीं मिलने वाला, जो इसमें डेटा है, फैक्ट्स हैं दैट आर मेजरली कवर्ड इन योर प्रीवियस रिपोर्ट्स, लेकिन जो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो टर्म्स मैं यूज करूंगा, जो कीवर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग अ प्रीटी गुड डिस्क्रिप्टिव आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी अपडेट्स, डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, cyber security measures, climate risk initiative, strengthening the NBFC oversight, all these points are discussed under this particular report. So why this report is important for government and RBI? So this report is important for government and RBI because it will help government to frame the policies as well as for RBI to take the regulatory actions. It is important for banks and NBFC so that banks can manage their risk pretty well. Banks should be ready to stand strong against the stress. It is important for investors because it gives the confidence to the investor depending upon the financial report. And lastly, it is important for the analyst, deep insights into the financial sector performance, which is very much important. So right now, you fall in this category because you want to analyze this report pretty well so that you can write the answers in the examination and you can clear the exam to create these policies, to create these reports in the near future once you will be the part of RBI as a grade B officer. Moving on to the next point. So जैसे ये report, अब मैं report को open कर रहा हूँ. The moment I was checking out the report, the first thing which was written in front of the report, और जो starting पे जो दिया था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ये term पढ़ी है या नहीं, but whenever you open up a book or a report, they use a term that is forward. I hope you have heard about this. I'll just write it. ये आपने जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा। अब मुझसे कोई पूछे कि सर ये forward का मतलब क्या है, then my answer to this particular question is forward is basically a piece of writing at the beginning of the book that introduces the book. तो यहाँ पे ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025 है, उसके स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड दिया गया, दैट हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, एंड आई कॉल इट एज अ प्रीलूड ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। प्रीलूड का मतलब क्या होता है? सो प्रीलूड बेसिकली मीन्स बिफोर यू स्टार्ट detailed discussion of any event, of any aspect, you need to have a short piece of understanding before the event is being discussed in detail. तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो prelude है which has been given by the Sanjay Malhotra, the governor of RBI, is basically the summary of this report. अब आप सोच रहे होंगे कि summary कैसे? अब जो अगले 10 मिनट या 5 मिनट में इन्वेस्ट करूंगा on Sanjay Malhotra's prelude, that is the entire summary of this particular report. ध्यान से सुनना, ये रिपोर्ट क्या कहती है? I'm just removing my image. पहला, इस रिपोर्ट में, इस प्रीलूड में बात की गई है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, और संजय मल्होत्रा जी ने रेफर किया कि सिंस दिसंबर 2024 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क हैव इंक्रीज्ड। क्यों भैया ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क क्यों इंक्रीज हुआ? सर ये इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनप्रिडिक्टेबल यूएस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इससे हुआ क्या सर? इससे आपकी मार्केट वॉलेटाइल हो गई। ऑब्वियसली कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, और अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे रखनी चाहिए या नहीं, क्या ये मार्केट लॉन्ग टर्म पे अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। मान लो आज यूएस ने इंडिया के साथ अपने टैरिफ्स 200% बढ़ा दिए, तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इंडिया की मार्केट डूब जाएगी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस the investors from US who have invested in India, or investors from other parts of the country who have invested in India, they started disinvesting the funds, due to which India has recorded highest FPI and FDI outflow. इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट FPI और FDI आउटफ्लो रिकॉर्ड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है सडन प्राइस ड्रॉप अक्रॉस द ग्लोबल एसेट्स। ऑब्वियसली जैसे ही यूएस ट्रेड इश्यूज बढ़ने लगे, या यूएस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अनप्रिडिक्टेबल है उनका रिस्क बढ़ने लगा, उसके साथ साथ
जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगी, फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या इजराइल ईरान हो या फॉर दैट मैटर इंडिया पाकिस्तान हो, तो उससे क्या हुआ, एवरीवन दोज हु वर इन्वेस्टिंग आउटसाइड देयर नेशन, दे स्टार्टेड सेलिंग आउट देयर एसेट्स, और उन्होंने कोशिश की दैट दे शुड टेक देयर फंड्स आउट ऑफ द फॉरेन investments or out of the foreign countries. Not only in India, in most of the countries, especially in the developing countries, the investment which was done from the development countries, उसे क्या किया गया, repatriate किया गया, it was taken back. अब इसकी वजह से होगा क्या सर, everyone wants to disinvest, that means everyone wants to sell the asset. If everyone is selling the asset, demand is less than supply or supply is greater than demand, which will result in drop in price of the global assets. सेकेंड इज टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस. सर इस सिचुएशन में जब समझ आया कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सेल ऑफ असेट्स, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. दिस लेड टू द वीकर ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक. सो इसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ सर, इसका रिजल्ट हुआ वीकर ग्लोबल ग्रोथ आउटपुट. सो सम डिस्पाइट सम रिकवरी, markets are still uncertain and asset price remain overvalued, especially in tech stocks. तो संजय मल्होत्रा जी ने कहा अभी भी ग्लोबल मार्केट के लेवल पे हम बात करें तो मार्केट अनस्टेबल है, और ये जो एसेट प्राइस है स्पेशली फॉर दी टेक स्टॉक्स वो ओवर प्राइस है, जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइस असेट्स की होल्डिंग कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनकी वैल्यूएशन कम होगी, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर इन अ नेगेटिव मैनर. ही टॉक्ड अबाउट द रिस्क्स. He said, he talked about the high public debt globally. So जिसकी वजह से जो public debt है that has been increasing not only in India but all over the globe. Leverage in the non-banking financial intermediaries is increasing, which means debt to equity ratio is increasing. Non-banking financial institutes, they are borrowing more in comparison to receiving the investment, and that borrowing results in increase in liability on them. Along with that, the risk related to trade फ्रेगमेंटेशन. ट्रेड फ्रेगमेंटेशन का मतलब यूएस किसी के साथ डील साइन कर रहा है, इंडिया किसी के साथ डील साइन कर रहा है, वो जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ट्रेड विच वाज गोइंग ऑन इन अ वेरी स्मूथ मैनर वो अब डिसरप्ट हो गया, विच हैज लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ trading groups that is known as trade fragmentation. Then climate change is one of the biggest risks. Technological disruption is one of the biggest risks. तो in short अगर मैं कहूँ, as per संजय मल्होत्रा, the world economy is facing more shocks, और इस समय पे प्लान करना, पॉलिसीज बनाना is really very hard. But yes, RBI has done a good job in framing these policies and implementing these policies in maintaining a stable economy for the nation like India. ठीक. Now, after discussing the global context, Sanjay Malhotra ji, he discussed about the India's position. In the prelude or in the forward presented by Sanjay Malhotra, he said that India is still growing strongly. क्यों? एक तरफ आप कह रहे हो कि ग्लोबल मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, एक तरफ आप कह रहे हो कि ग्लोबल मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा, बट स्टिल यू आर सेइंग दैट इंडिया इज ग्रोइंग स्ट्रांगली. क्यों? द रीजन इज सर, इंडिया इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड. भैया हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कि आई नॉट से दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, बट यस, द डिमांड generated within India, the private consumption expenditure of the nation, it is responsible for the majority part of India's GDP. तो इसका मतलब ये जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इस वजह से डिमांड ज्यादा, डिमांड की वजह से सप्लाई ज्यादा, जिसकी वजह से वी आर रीचिंग टू दी ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स और ऑलमोस्ट targeted GDP growth estimates. Then India has come up with good economic policies. If I talk about some of the policies which have been implemented in the past, the best one out here is n number of credit facility or credit related schemes which have been introduced by the government to provide credit facility to MSMEs, to the agriculture sector, in order to fill the gap of credit demand. Then we have production linked incentive scheme. It is one of the brilliant economic policy presented by the government which has boosted the economic growth. And next we have stable macroeconomic conditions, which means our prices, our inflation, our growth rates, they all are looking stable as of now.
इन्फ्लेशन इज लो बट येट अंडर कंट्रोल एंड आरबीआई इज इन कॉन्फिडेंस. आप सोचो ना कि इंडिया इज टारगेटिंग अ इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2 to 6%, and right now we are close to our lowest level, because if I'm not wrong, in the month of May the recorded inflation rate CPI combined was 2.8%. और अगर हमारी इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है और अगर इस टाइम पे आरबीआई विल कम अप विद n number of initiatives to boost the economy. In order to boost the economy, you have to increase the flow of funds in the economy. तो जब आप flow of funds increase करेंगे economy में, that will result in increase in demand, that will result in increase in inflation. So it's good. So it's good. Why it's good? Because sir, it will boost the development, it will boost the growth. और अगर इससे inflation बढ़ेगा भी, still we are going to remain in the control range itself. Problem तब होती जब इंडिया slow grow कर रहा होता. On one side India is growing pretty slow, on the other side we have pretty high inflation rates. So that is a condition of deadlock where government or RBI cannot take one of the corrective measures in a full-fledged manner to achieve the growth along with managing the inflation simultaneously. However, the external shocks, ज़्यादा खुश मत हो, उन्होंने कहा कि जो external shocks हैं और climate related issues हैं, they can undoubtedly affect the growth of the country. If I talk about the Indian financial system, banks and NBFCs, NPAs are decadal low, good capital level, that means CAR or capital adequacy is good. Banks, they are recorded good profits. If we talk about the public sector banks or all over scheduled commercial banks, they have recorded pretty good profits in the last financial year. Then he discussed the stress test. He said that stress test shows that banks and NBFCs, they will, during the stress test, they have remained stable. That shows that they will be holding this stance during the tough times as well. Corporates also have healthy balance sheet, which will support the economy. If I talk about the regulatory focus, regulators like RBI are focusing on customer protection, encouraging innovation, maintaining competition and ensuring financial safety and growth. ये दो लाइनें उन्होंने कही जो मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया. He said that RBI believe that financial stability is must have, not just a bonus for India's long term growth. उन्होंने कहा कि ये जो financial stability है, price stability है, it is a must have thing. ऐसा नहीं कि it's a bonus. If you want India to grow in long term, if you want India to become a developed nation by 2047, it can be possible only and only if you are, only and only if your economy has this price stability or your economy has the financial stability. So he said a stable and efficient financial system is essential for economic growth, and regulators, they must stay alert and ready for the challenges. So this is the prelude given by Sanjay Malhotra ji in the starting of this report itself. ध्यान से सोच के बताओ, आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने प्रीलोड में पूरे का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसकी समरी तो दे ही दी. हमें ये पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि रिपोर्ट क्या होने वाली है. अब हम निटीग्रिटीज को जरूर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द निटीग्रिटीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. अब हम जो डेटा है उस डेटा को जरूर देखेंगे सो दैट वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एंड वी कैन आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. इफ इट इज क्लियर, जस्ट गिव मी यस सर. ठीक है जी. नाउ लेट्स ओपन अप द रिपोर्ट. अब जैसे मैं इसके अगले पेज पे गया रिपोर्ट के, तो मुझे मिला इंडेक्स. उस इंडेक्स में था कि सर इस रिपोर्ट में 3 चैप्टर्स हैं. पहले चैप्टर में वी विल डिस्कस द रिस्क ऑन ग्लोबल इकोनॉमी as well as domestic economy. We'll discuss the status of financial market, global as well as domestic. Then we'll discuss the risk as well as the status of corporate and household sector. We'll discuss the status and risk on banking system, and then we'll discuss the survey, systematic risk survey कि क्या कहते हैं पब्लिक, क्या समझती है पब्लिक का क्या कॉन्फिडेंस है towards the Indian financial sector as well as towards the global financial sector.
सेकेंड पॉइंट आया या फिर सेकेंड चैप्टर आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि हाउ वेल आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेडी. दैट मीन्स दिस इज फुल ऑफ डेटा. This is full of data that what is the current status of our financial institutes and how well they are performing and how strong they are to counter the stress test or how well they have performed during the stress test which have been conducted on them. And the last part is the chapter 3 which talks about regulatory initiatives in the financial sector, कि past में क्या क्या रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द ग्लोबल रेगुलेटर्स, बाय द डोमेस्टिक रेगुलेटर्स, और क्या क्या अदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इन पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर क्या और इनिशिएटिव्स, चेंजेस, पॉलिसीज लाई जा सकती हैं इन द नियर फ्यूचर टू अचीव प्रीटी गुड रिजल्ट्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो इस वे में इस पूरी रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया. द वे आई सेड कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, एक बार दोबारा से बताता हूं. Sir, it is basically a report in which we discuss the risk on the financial sector, global and majorly on the domestic sector. Then with respect to this risk, we come up with an answer that how sound or how much our financial sector is ready to handle this risk. And along with this, what are the regulatory initiatives which have been taken in the past in order to achieve this soundness. And this readiness, कितनी readiness है, ये कैसे पता चलेगा सर? ये कितनी readiness है ये पता चलेगा किस बेसिस पे, ये कितनी readiness है या किस लेवल का readiness है वो कैसे पता चलेगा सर? That will be clear with the help of the results of stress test. तो ये है बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. आज पढ़ लो, अगले 6 महीने बाद पढ़ लेना, 1 साल बाद पढ़ लेना, 5 साल बाद पढ़ लेना, इसका स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन द सेम. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें हम बात करेंगे ग्लोबल आउटलुक पर. दैट व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, व्हाट आर द रिस्क related to the global economy or what risks are going to impact the global economy in the near future. ठीक है जी, ready? Let's get started. So the first point is the world economy is under pressure. Now the question is, so why world economy is under pressure? See, ये जो मैंने आपके लिए keywords लिखे हैं ना, अगर आप एक बार रिपोर्ट खोल के देखेंगे, you won't be able to understand even a single page. I have given you the summary of this report and that too in very simple words. और उसमें मैंने वो keywords को highlight कर दिया है which you must know if it is asked in a objective question to choose the correct option out of the 5 given, or you can use these keywords while writing a descriptive answer. ठीक है जी. So the world economy is under pressure. कोई पूछे क्यों world economy under pressure में? So because of ongoing trade disputes, because of uncertain policy environment, as well as weak consumer confidence. अब consumer का confidence क्यों weak है? So that is because of geopolitical tension, that is because of geographical fragmentation. These are the reasons, along with tariff war, which is basically resulting in low confidence of the consumer. और अगर consumer का confidence low यानी demand low यानी प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट्स या ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी क्या करेगी? डाउन जाएगी. सो इवन दो देयर इज अ होप फॉर ट्रेड डील्स, द इकोनॉमिक आउटलुक स्टिल स्टेज फ्रेजाइल. की कंसर्न्स आर पीपल मे कट बैक ऑन स्पेंडिंग. सर सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सिचुएशन टफ हो रही है, नॉट इन इंडिया बट ऑन द ग्लोबल लेवल, people may cut on their spending so that they can save more in order to stay or in order to survive during the tough times. Business might delay investment. अगर मान लो मेरा business है, ठीक चल रहा है, I want to expand, but इस situation को देखते हुए, current scenario को देखते हुए, I won't invest, I won't expand, I would just say कि रुकते हैं, let the business go the way it is going on, let's try to earn some profit, let's keep it as a reserve to fight against the tough times. Then we have the financial conditions could tighten further. अब ये जो financial conditions है ये हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा टाइट हो जाए depending upon the global scenarios. अब इसमें जो सबसे बड़ा
प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके टैरिफ शॉक्स की या टैरिफ वॉर की। अब अगर मैं टैरिफ शॉक से रिलेटेड एक डेटा शेयर करूं विच इज फ्रॉम OECD रिपोर्ट, it says that US has increased its tariff significantly in 2025, which is, we can call it as unpredictable trade policy which is going on in the economy. According to the OECD's June 2025 report, the effective tariff rate on US imports has jumped from just over 2% in 2024 to 15.4% by mid 2025। तो आप देख रहे हैं, हमें, मैं जानता हूं कि ये जो टैरिफ है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, टैरिफ इज इवन डिफरेंट ऑन डिफरेंट गुड्स, ऑन डिफरेंट सर्विसेज, बट इफ आई टेक अप a cumulative answer for all the nations, for all the goods, for all the services, तो earlier जो US imports पे tariffs थे, they were only 2%, but now the effective tariff has increased to what value? So now the effective tariff has increased to a value of 15.4%, which is highest since 1938. अब इसका impact क्या होगा? So these tariffs will result in slow down global trade, और अगर ट्रेड स्लो हो गई तो ऑब्वियसली डिमांड कम, सेल परचेज कम, प्रॉफिट कम, इनकम कम, ग्रोथ कम, और उसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का टू इन्वेस्ट, स्पेंडर्स का टू स्पेंड, वो कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? कम होगा। समझ आई ये बात? इफ इट इज क्लियर गिव मी यस सर। यार ऑब्वियस ही बात है ना, अनसर्टेनिटी एनवायरमेंट क्यों है? दी अनसर्टेनिटी पॉलिसी एनवायरमेंट इसीलिए है, द वे आई टॉक अबाउट द ट्रेड पॉलिसी और द टैरिफ पॉलिसी, ये अनसर्टेन है ना। आज कुछ और है, हो सकता है कि कल फिर से कोई न्यूज आए और ये टैरिफ पॉलिसी फिर से बदल जाए, तो अनसर्टेनिटी है ना। अभी तक स्टिल एवरीवन इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि क्या यही टैरिफ्स रहने वाले हैं, या तो लॉक कर दो कि यही टैरिफ्स हैं, यही रहेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ऐसा तो नहीं है। टैरिफ पिछले 3-4 महीने में काफी बार चेंज हुए एंड फ्रॉम नेशन टू नेशन चेंज हुए, तो इसकी वजह से वी कॉल दिस टर्म एज अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरमेंट। Moving on to the next point, the global economy and the financial system have demonstrated exceptional resilience in the face of multiple shocks। तो उन्होंने कहा कि सर अभी भी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है और हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, still it has performed pretty good during these multiple shocks. However, the imposition of higher tariffs by US has introduced a fresh shock to the global economy। तो उन्होंने कहा कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, या उससे पहले कोविड-19 इश्यूज थे, या ज्योग्राफिकल फ्रेगमेंटेशंस थी, दोज इश्यूज वर हैंडल्ड in a decent manner by the global financial system, but these imposition of higher tariffs introduced by US, it has introduced a new fresh shock to the global economy। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि जो ग्लोबल आउटपुट है वो कम हो जाएगी, और वो हो सकता है हिस्टोरिकल एवरेज से कम जाए। तो यहां पे देखो, द ग्लोबल रियल जीडीपी, अगर आप ध्यान से देखें, इट इज इवन बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज। अगर आप 2007-9 के क्राइसिस को हटा दें, अगर आप कोविड-19 को हटा दें, तो उसके अलावा जो हमारी एवरेज वैल्यू है, उसके अलावा ये जो हमारी एवरेज वैल्यू है, हिस्टोरिकल एवरेज, उससे भी नीचे चला गया क्या? ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट। और दूसरी तरफ जो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन रेट्स हैं, उससे काफी ऊपर चली गई हैं हमारी ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट्स। देख रहे हो प्रॉब्लम? समझ रहे हो कि एक तरफ आपकी जो जीडीपी है, योर जीडीपी ग्रोथ रेट्स आर लो, प्लस योर इन्फ्लेशन रेट्स आर हाई, अब करें क्या? अगर आपको जीडीपी बढ़ानी है, यू हैव टू इंक्रीज डिमांड सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सो दैट जीडीपी इंक्रीजेस। लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए यू हैव टू इंक्रीज मनी सप्लाई, एंड इफ यू विल इंक्रीज मनी सप्लाई टू इंक्रीज द डिमांड, दैट वुड रिजल्ट इन एक्सेस इन्फ्लेशन, और इससे क्या आएगी? अनस्टेबिलिटी। और इस सिचुएशन को हैंडल करना, सर्वाइव करना is going to be really very tough. So that is the basic problem. So what is the problem going on right now? So right now the global economy is witnessing GDP growth rates below the historical average, and our global inflation rates are above the historical average। ये values आपको याद नहीं करनी, लेकिन ये जो concept है
अबव और बिलो वाला, ये आपको जरूर समझना है। कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स रिमेन लेस देन फेवरेबल रिलेटिव टू देयर लॉन्ग रन ट्रेंड्स। तो ऑब्वियसली जो हमारे ग्रोथ डायनामिक्स है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो डायनामिक है, दैट इज नेगेटिव। व्हाई दैट इज नॉट फेवरेबल, व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक तरफ जीडीपी कम है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो इन दोनों को मैनेज करें तो करें कैसे? और यही जो नेगेटिव सिनेरियो है, दैट इज अ पीस ऑफ कंसर्न फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव ऑन वन स्लाइड, प्लीज पे अटेंशन। एक ही स्लाइड पे 2 या 3 क्वेश्चन जो फेज 1 में पूछे जाएंगे फॉर श्योर, वो मैंने लिख दिए हैं, देख लो। पहला, अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू OECD, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। सुन लो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू IMF, World Economic Outlook Report, it is projected that the global growth rate for 2025 is going to be 2.8%. It is going to be 2.8% and it will be 3% for 2026. अब अगर मैं बात करूं OECD की, that is Organization for Economic Cooperation and Development, according to its report, that is Economic Outlook Report, which was also released recently in June 2025, global GDP forecast is 2.9%. And if I talk about World Bank, according to the June 2025 World Bank Global Economic Prospects Report, it projected that global GDP will be again 2.9% in 2025. इस स्लाइड से फॉर श्योर एक या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसे कंक्लूड करके लिख देता हूं। हमसे कोई पूछे कि IMF की कौन सी रिपोर्ट, तो आंसर आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल जीडीपी विल ग्रो बाय 2.8% इन 2025। वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, अगेन जून 2025। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इट विल ग्रो बाय 2.9%। लेकिन OECD की रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है और ये सिर्फ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, कंफ्यूज मत होना। So this is economic outlook report, and according to the economic outlook report, what is the expected GDP growth estimate? So that is 2.9%. Screenshot ले लो, confirm। एग्जाम के बाद बात करना कितने क्वेश्चन आए थे फेज 1 में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछे जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट डिस्कस किया गया रिगार्डिंग द ग्लोबल आउटलुक, दैट इज ऑन डिसइंफ्लेशन। Guys, how many of you have heard this term disinflation? What is the meaning of disinflation? How we define the word disinflation? तो ध्यान से देखना। So disinflation is basically a situation. It is basically a situation where we are still in a situation of inflation. We are still in a situation of inflation, but the rate at which inflation changes is decreasing। या मैं इसको बड़े सिंपल वे में कहूं कि इंडिया में आज भी इन्फ्लेशन तो है, जो कि पहले 6% थी, अब 4% हो गई, 4% से या 5% हो गई, 5 से हो गई 3%, 3 से हो गई 1%। तो अभी भी इन्फ्लेशन तो है, बट द इन्फ्लेशन रेट्स दे आर डिक्रीजिंग, और आई वुड से द रेट एट विच इन्फ्लेशन इज चेंजिंग, दैट रेट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। अब वो रेट डिक्रीजिंग कैसे है? सर इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ कितना? -1%। सर यहाँ कितना? -2%। और यहाँ मान लो ये कितना हो गया? सर दिस इज 0.5%, तो ये हो गया -2.5%। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जिस रेट से आपका इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, और इसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डिसइन्फ्लेशन। और जैसे ही ये इन्फ्लेशन रेट्स नेगेटिव हो जाएंगे, वी कॉल देम एज डिफ्लेशन। अगर समझना है तो ऐसे समझो, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो प्रैक्टिकली डिसइन्फ्लेशन को समझने का तरीका कुछ ऐसा है। डिसइन्फ्लेशन बेसिकली मींस द रेट एट विच इन्फ्लेशन changes is decreasing in nature। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां आपके इन्फ्लेशन रेट्स दे आर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। अब इसके बाद आपके इन्फ्लेशन रेट्स भले इंक्रीज हो रहे हैं,
भले आपके इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहे हैं बट दे आर इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। मान लो अगर यहां पे इन्फ्लेशन 10% है, it has increased to 14%, then it has increased to 16%, then it has increased to 17%। इसका मतलब क्या सर, जिस रेट पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है दैट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डिसइन्फ्लेशन। गॉट इट? सो डिसइन्फ्लेशन लूजिंग मोमेंटम, तो ये जो डिसइन्फ्लेशन है इट इज लूजिंग इट्स मोमेंटम। इन एडवांस इकोनॉमीज इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव द सेंट्रल बैंक टारगेट्स। तो आपकी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट्स आज भी टारगेट से ज्यादा है, उनमें इन्फ्लेशन रेट आज भी टारगेट से ज्यादा है। लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, इन्फ्लेशन रेट इज बिलो द टारगेट। हमारा टारगेट क्या है? 4% प्लस माइनस 2%। टारगेट एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट सिंगल टारगेट दैट इज 4%, एंड इन इंडिया द इन्फ्लेशन रेट इज 2.8%, दैट इज ऑब्वियसली बिलो द टारगेट। सो दैट इज ट्रू। What is the reason of this inflation stickiness in the advanced economy? अगर कोई पूछे कि सर एक तरफ आपने कहा कि एडवांस इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन रेट्स ज्यादा तेजी से नीचे नहीं आ रहे या तेजी से नीचे ही नहीं आ रहे, उसका रीजन क्या सर? स्टिकीनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई सर्विस इन्फ्लेशन। जो सर्विस कॉस्ट है दैट इज प्रीटी हाई, सो हाई सर्विसेज इन्फ्लेशन। कोर गुड्स प्राइसेस राइजिंग अगेन, तो जो कोर गुड्स हैं उनके प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग, एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू द टैरिफ्स। अब यूएस में ड्यू टू अनसर्टेनिटी समझ ही नहीं आ रहा कि किस प्रोडक्ट का प्राइस नियर फ्यूचर कम होगा, किसका ज्यादा होगा। दैट इज समथिंग विच इज इंपैक्टिंग द बायर्स एंड सेलर्स टू टेक अ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन कि पैसा कम होगा या बढ़ेगा, एक डिसीजन लें और परफॉर्म करें हमारा ट्रांजेक्शन। सो मेनी कंट्रीज दे हैव बिगन कटिंग इंटरेस्ट रेट, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यूएस के साथ है, बिकॉज यूएस which has kept its rates unchanged so far। तो यूएस ने रेट्स चेंज किए लेकिन पहले चेंज किए थे। अगर रीसेंट टाइम्स में बात करें, आफ्टर दिस ट्रेड वॉर और आफ्टर दिस टेरिफ इशू, दे हैवंट चेंज्ड देयर रेट्स, एंड दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रही अप टू अ मार्क वी वर एक्सपेक्टिंग। तो अगर आप ध्यान से देखें इंडिया के लिए, तो इंडिया की जो करंट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज बिलो द टारगेट। ये जो ब्लैक पॉइंट है दिस इज द टारगेट फॉर साउथ अफ्रीका, ब्लैक 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 फॉर चाइना। लेकिन अगर आप बात करें फॉर नेशन लाइक यूके, फॉर यूएस, फॉर जापान, इन नेशंस के लिए अगर आप बात करेंगे, इफ आई जूम इट फॉर यू, या आप यूरो जोन के लिए बात करेंगे, द जोन विच हैज और आई वुड से द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच पोजेस द यूरो एज करेंसी, तो उसमें अगर आप देखेंगे उनका जो रेट ऑफ, उनका जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज इवन हायर देन द टारगेट वैल्यू, even higher than the target value. That is a point. Is this clear? So this is something which you need to remember. Chalo, moving on to the next point. Now what does the next point says? So the next point talks about, along with these issues, global public debt is also increasing, which is a big risk. So as per the Financial Stability Report, it says that as of 2025, public debt, the global public debt divided by GDP, divided by global GDP, it is basically 95%. It is basically 95%, and it is expected to go to a value of 100% by 2030. और अगर कुछ extreme scenarios हुए, कुछ extreme cases हुए, then it can even go to 117%, which is a point of concern. So 1/3 of the countries covering 80% of the world's GDP, they have more debt than pre-COVID levels. These countries are also running high primary deficit. I hope you understand what is primary deficit. One, we have fiscal deficit. Fiscal deficit is basically your total expenditure minus total receipts except borrowings. And what is your primary deficit? So that is, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो आपने पुराने पाप किए जिसके बदले में यू आर पेइंग द इंटरेस्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट, दैट गिव्स यू प्राइमरी डेफिसिट। दैट मींस दिस इज द एक्चुअल अमाउंट बोरोड टू मैनेज द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंस। सो
primary deficit is increasing, fiscal deficit is increasing, because of which borrowing is increasing, and due to this 100% of borrowing or 100% of the GDP will be the public debt by 2030 as per the data shared. So as you can see, public debt global as well as advanced economies and emerging economies. For emerging economies, it's going to be 84%. For advanced, it's going to be 113%. But for global value, if I talk about for the entire globe as a whole, it's going to reach to a value of 100% by 2030, which is not a good call. कभी भी debt जो है वो अच्छी नहीं है, because it not only creates liability, but the servicing of the debt is a regular liability on the economies, which will impact their regular investment, which will impact their regular growth, which will impact their regular demand and development of the economy. ठीक है जी? Is this point clear? Moving on to the next point. The next point is, अब अगर आपने borrow ज़्यादा किया, if you are borrowing a lot, then obviously you have to pay the interest rate. And if you have to pay the interest rate, then you will witness the heat of interest rate burden. So interest cost as percent of government revenue has remained high in most of the advanced economies as well as emerging economies. अगर आप advanced economies और emerging economies की बात करें, तो उनके ऊपर जो interest rate है, that is, or I would say the जो interest cost है as a percentage of government revenue, it's pretty high. As a percentage of government revenue is pretty high. और उसके साथ साथ if we talk about the other aspects, that is, this makes debt sustainability difficult. So debt will be difficult to sustain because it will be difficult to service the interest or service the debt, especially for US and Europe. So Moody's, it has downgraded the US sovereign rating. यूएस की सॉवरेन रेटिंग को कम किया, डाउनग्रेड किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर डेट, बिकॉज ऑफ हायर फिस्कल डेफिसिट एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट बर्डन. सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, what are the reasons which have led to the downgrade of US sovereign rating, then your answer should be what? So your answer to this particular question will be pretty clear. So that is 3 reasons: higher debt, high fiscal deficit, and rising interest rate burden on the nation like US. Along with that, high import tariffs, which will impact the overall GDP and growth of the country. If this point is clear, just give me yes sir, so that I can move ahead. If you have any doubt till this point, you may ask, please. Okay, if I give you an example to this particular question, interest cost to government revenue of India is around 23%. मतलब गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू का almost 23% is paid by the government, to pay back the interest payment. अगर आपको याद हो तो rupee comes, rupee goes, तो उसमें भी हमने ये सारी चीजें जरूर पढ़ी हैं. So that is around 23% if I'm not wrong, or I would go bit safe, I'll say it is greater than 20%, but it is around 20% only. I'm not pretty sure about the exact data. Can anyone give me the exact data on this, if you can recall? Interest cost with respect to government revenue. Anyone can give me the exact percentage on this? Go search it once so that you can give me the answer. If I'm not wrong, it is around 23%, if I'm not wrong.
but if you can give me the correct answer, that would be good. Check it and give me the answer in the comment section itself. Okay, moving on to the next point. The next point talks about the domestic outlook. Now we will be talking about the status of Indian economy according to the Financial Stability Report. In that particular format, I would say India remained the fastest growing economy or fastest growing major economy in 2024-25. Growth was stable despite of the global slowdown. Why India's growth was stable? So that was basically, we have discussed already, that was basically because of India is mainly driven by domestic demand, as well as this has limited, or this has safeguarded or provided a cushion to India against the external shock. The real GDP growth projected is same as that of last year, that is 6.5%. So this is very important that RBI is still sticking to the point, irrespective whatsoever is the estimate given by IMF, World Bank. RBI is still on the same call that Indian economy will grow by 6.5%, because RBI says that India will grow by 6.5% due to urban and rural demand revival, due to government capital expenditure expansion, due to high capacity utilization in industries and favorable financial conditions of the economy. If I talk about risk to growth, global factors, they may slow India down. There is no doubt. ऐसा नहीं है कि ग्लोबल कुछ भी होता रहे और इंडिया पे असर नहीं पड़ेगा. That is not correct. इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छा लिंक दिया है. If you try to understand this link, it says that अगर global growth, it says that if the global growth falls by 1%, if the global growth falls by 1%, then India's growth will slow down by 0.3%. It will slow down by 0.3%. समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? So it means if the global growth, if the global GDP falls by 1%, then India's growth will also expected to fall by 0.3%. अगर मैं कहूँ कि पहले we were expecting that global growth rate to be 3%, now it is 2%. Earlier we were expecting Indian economy to grow by 6.5, then it will come to 6.2% due to the global impact. So trade disruptions as well as weather related events will impact, geopolitical tensions will impact, and this is the relationship which is very important, which has been shared in the global financial report, which has been shared in the global financial report. Is this point clear, everyone? If it is clear, just give me yes or. Moving on to the next point. The next point says inflation trends. So CPI inflation has dropped down to 2.8% in May 2025, which is lowest in last 6 years. Since 2019, it is lowest. Food inflation outlook is favorable because of expectations of good harvest, lower global prices. This will help, and this help has already been witnessed because our food inflation is all-time low. Imported inflation risks are also low because there is a weak global growth, and if the global growth rate is low, if the global growth rate is low, then undoubtedly due to this low global growth rate, it will impact, its impact will be pretty less, क्योंकि अगर आपकी global growth rate low है तो आप ज़्यादा increase in price नहीं है, और अगर ज़्यादा increase in price नहीं है तो it's quite obvious that we will be importing at low prices. Lower oil and commodity prices will support our inflation trend. However, the tension in Middle East could pose uncertainty that may result in Iran and Israel issues, that may result in increase in oil prices. RBI expect inflation to stay below 4% target
गिविंग मोर स्पेस टू द मॉनिटरिंग ईजिंग। लेकिन आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर गोइंग टू स्टे विद इन द रेंज, दे आर गोइंग टू स्टे विद इन द रेंज। Okay, done. Chal, moving on to the next point. Now, the next point is a very important aspect which we need to understand. So, as you can see, interest expense to revenue ratio, as I was saying, it is not 23, it is 24.3% for India. So, interest expense or interest cost with respect to the revenue cost is 24.3%. On the other side, if I talk about the if I talk about the primary balance, or I talk about the debt to GDP, so debt to GDP ratio of India, it is 81.3%, and primary balance percent of GDP is what, sir? It is minus 2.3%. So I would suggest you this and this are the two areas which you need to remember. These are the data which will help you a lot. Along with this, India's public debt, primary deficit and interest payments are higher than the other emerging economies. तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि regardless of the fact कि इंडिया अपने इंटरनल डिमांड पे डिपेंड करता है, इंडिया इज स्टिल strong during the current global tensions, but if you talk about the primary deficit, if you talk about the interest payments, if you talk about the public debt, India is witnessing higher values in comparison to the emerging economies. Reason is quite simple, that India wants to grow, and due to this growth vision, India is expanding its infrastructure, and due to this expanding infrastructure thought, our expenditure, India is trying to expand its infrastructure, and with the thought of expanding infrastructure, undoubtedly there is a burden on the government on the expenditure side, because of which the expenditure is high, and due to the high expenditure, these areas or these aspects are also pretty high. But सिर्फ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं. पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंक्लूड फिस्कल क्रेडिबिलिटी हैज इंप्रूव्ड. India's fiscal credibility has improved because of fiscal consolidation. We have controlled our fiscal deficit as a percentage of GDP. Better quality of government spending, where we are now spending majorly for capital, or I would say government has increased its spending on capital side, which is resulting in creation of assets, which is resulting in creation of machinery, which is helping us to create n number of consumable goods, rather than making or rather than government spending to purchase or to import the consumable goods. एक तरफ गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है to buy the tank, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है to construct a factory which will manufacture a tank. So the second one is more promising, na? So that is a point. Adoption of GDP, adoption of debt to GDP as a long-term target. So RBI has taken up, government has taken up the debt to GDP long-term target, which will be achieved. मोस्ट गवर्नमेंट डेट, इसमें एक और पॉजिटिव चीज है जो आपको समझना होगा. हमने कहा कि गवर्नमेंट के ऊपर लोन बहुत है, मान लिया, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के ऊपर जो मेजर लोन है दैट इज डिनोमिनेटेड इन INR. डिनोमिनेटेड इन INR का मतलब देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क. देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Second is majority loan. Out of 197% loan is fixed rate loan. That means इट इज नॉट मार्केट वॉलेटाइल. ऐसा नहीं है कि कल को मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होगा तो हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे. नहीं सर, हमारा 97% जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज फिक्स्ड. लॉन्ग मेच्योरिटी, एवरेज मेच्योरिटी हैज इंक्रीज. तो हमारे ऊपर जो लोन है दैट इज फॉर लॉन्ग पीरियड. अर्लियर जो एवरेज मेच्योरिटी थी ऑफ अ लोन वाज 10.4, व्हिच हैज नाउ इंक्रीज टू 13.2 years, which is a good sign. On the other side, if I talk about the debt sustainability, debt levels are on a declining path compared to many economies. हाँ, मान लिया इंडिया का डेट ज्यादा, but now it is declining, where in case of other economies it is increasing, but in case of India our debt is now on the decreasing side.
government benefits from a favorable interest growth rate gap supporting sustainability. Have you ever heard this term? Interest growth rate gap. ये अच्छा important term है. If you can recall this term, if you can give me something on this, otherwise I'll explain you. Else I'll explain you for sure. तो अगर आपके पास इसमें कुछ understanding है, तो do let me know in the comment section. Have you ever heard this term earlier? Interest growth rate gap. काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, या फिर it would be a good content to write or to use while giving a descriptive answer where you are discussing the status of the global economy or status of the domestic economy. वहां पे इसे आप यूज कर सकते हैं for sure. Any idea? If you don't know, just give me N so that I can give you the answer. No? Chalo, I'll give you the answer. So the answer to this particular question is, let's say the real GDP growth rate of the country is 6%. Okay? On the other side, the real interest rate on the government debt is 3%. So 6 minus 3 is equals to 3%. So the concept of favorable interest growth rate gap refers to a situation in which economy or in which the country's economic growth is higher than the interest rate on its debt. तो अगर उसके डेट के ऊपर या गवर्नमेंट की जो लोन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो 5%, लेकिन गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट है 10%, आपकी इनकम बढ़ गई 10% और आपको इंटरेस्ट देना है सिर्फ 5%, दैट इज फेवरेबल. That is favorable. So a favorable interest growth rate gap exists when economic growth rate or real GDP growth rate is greater than the real interest rate on government debts. Why it is favorable? Because debt to GDP ratio falls naturally even without running a fiscal surplus. आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है और जो आपकी इंक्रीज इन इनकम है उसका रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट रेट यू आर पेइंग. सो देयर इज अ रूम फॉर प्रोडक्टिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ये सारी सिचुएशन है. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो in comparison to your growth rate, that is an unfavorable situation for an economy. ठीक है जी, clear हो गया point. Moving on to the next. The next point we have over here is current account deficit in 2024-25 is 0.6% of the GDP. So for 2024-25 हमारा जो current account deficit है वो 0.6% है, which is obviously manageable. और Q4 की अगर मैं बात करूं for 2024-25, our current account was surplus with value 1.3% of GDP. क्यों? Sir, it was supported by the strong service exports and it was supported by the high remittance inflow from the Indians abroad, and India is on the first rank in terms of inward flow of remittances. Then if I talk about the capital account trends, in case of capital account trends, if you see the gross FDI in India has increased, and this gross FDI has recorded to a value of $81 billion, which has increased by 14%, in comparison to the previous data. So if India's gross FDI has increased, then undoubtedly India is still a place, or India is still a destination which is favorable for the foreign investors. वो बात अलग है कि हमारी जो net investment है that is around only $1 billion or even $0.4 billion. तो net FDI is low. क्यों low है? Because of more repatriation of profits. Repatriation of profit का मतलब जो foreign company ने इंडिया में profit कमाया, they have not invested that profit in India, rather they have taken back that profit to their native country, जिसकी वजह से outflow बढ़ा. Higher outward FDI because of the market uncertainty. FPI inflow has also decreased because of market uncertainty. External commercial borrowings and NRI deposits has increased in the inflow side. So overall, net capital flows
आर लेस देन करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है दैट इज 0.6%, और ये 0.6% ऑफ जीडीपी का जो डेफिशिएंसी है वो कहां से पूरा होगा? सो दैट विल बी completed, that will be compensated through our forex reserves, जिसकी वजह से our forex reserves are going to fall down. अब आप मुझे बताओ, you tell me, in the financial year 2024-25, what is the depletion of India's forex reserves recorded? तो इंडिया के जो forex reserves हैं वो कितने deplete हुए हैं in 2024-25? Give me the answer in the comment section. Give me the answer in the comment section. I'm still waiting, otherwise I'll give you the answer. So if you ask me, in 2024-25 अगर हम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, दीज फॉरेक्स रिजर्व्स दे हैव इंक्रीज्ड बाय $21.9 बिलियन। सर ये क्या कह रहे हो आप कह रहे हो ये इंक्रीज हुए हैं $21.9 बिलियन, ये कैसे? उसका रीजन है, उसका रीजन ध्यान से सुनना। उसका रीजन क्या है? एक्चुअल में फॉरेक्स रिजर्व्स दे हैव विटनेस depletion, and ये depletion कितना था? So the depletion value, this depletion value was $5.6 billion। ये असल में जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं दे हैव रिड्यूस्ड बाय $5.6 बिलियन, बट आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं दे वैल्यूएट, और इस साल का जो वैल्यूएशन है दैट वैल्यूएशन इज 26.9। तो इस वैल्यूएशन को इंक्लूड करने की वजह से वी हैव अ टोटल इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व्स बाय $21.9 बिलियन, बट एक्चुअली देयर इज अ fall in change in forex reserves, that is $5.6 billion, because of the current account deficit compensation, or because of the servicing need to be done for the current account deficit. Capital flow is under stress, so RBI's capital flow at risk framework shows the extreme shocks. That means there is a 5% probability कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, जिसकी एक्सट्रीम सिचुएशन होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, इट सेज दैट FPI outflow could even reach as high as 6% of GDP, and total capital outflow may even go up to 7% of GDP. तो अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हुई ड्यूरिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन, और उस एक्सट्रीम सिचुएशन होने के चांसेस 5% है, अगर ये एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, इन दैट पर्टिकुलर केस FPI outflow will be 6% of GDP, and total capital outflow will be around 7% of GDP. Last but not the least, related to the domestic outlook, indicators की बात करें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है that was $697 billion, which is capable to manage the 11 months merchandise imports. External debt, very important, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है that is 19.1% of the GDP. Short term debt residual is 45.4% of forex reserves. लेकिन अगर आप बात करेंगे, if you talk about the total debt, in case of total external debt, majority portion is long term, greater than 60%, or I would say greater than 70% is your long term debt, and short term debt is around 20%. It is around 20%. Is it clear, everyone? So this is all about two things. First is your domestic outlook, and second is your global outlook. अब इसके बाद in the first chapter we have global market outlook. After the global market outlook, in the first chapter itself, और क्या क्या areas हैं which we have to cover, which we will be covering in much brief. ये जो
ग्लोबल एस्पेक्ट्स थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बट इसके बाद चीज़ें काफ़ी ब्रीफ में कवर करने की ज़रूरत है. सो after this, what all things we will be talking? We will be talking about corporate and household sector. Then we'll talk about the systematic risk survey. Chapter 1 complete. फिर chapter 2 में हम discuss करेंगे how strong scheduled commercial banks are, urban cooperative banks are, primary cooperative banks are, non-banking corporations are, and then we'll discuss the regulatory initiatives. So what I have planned is I will be covering this particular report in 3 parts. So today is part 1 where I have discussed with you the economic and where I have discussed with you the global and domestic outlook. In part 2, I'll discuss with you the soundness of Indian financial sector, and in part 3, I'll discuss the regulatory initiatives which have been taken by the Indian regulators. ठीक है जी, तो 3 पार्ट्स में ये क्लास कवर होगी. आज ये क्लास फ्राइडे को हुई है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे. आई आस्क माय टीम टू शेड्यूल दी सेशंस राइट अवे. ठीक है जी, डन हो गया. कोई डाउट है तो पूछ लो. आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना. दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन. डन. कंक्लूड करने से पहले आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स. डरने की जरूरत नहीं है इन रिपोर्ट से. इन रिपोर्ट्स का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, द वे आई एम डूइंग इट फॉर यू. जस्ट एनालाइज द रिपोर्ट, देखो क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं. Try to retain the keywords and use those keywords while writing the descriptive answer, and the data which has been shared, try to recall that data every time whenever you are going through with any kind of data bank, so that वो data आप relate कर पाएं. और अगर question directly data पे आए तो आप आंसर कर पाएंगे, keywords पे आप आंसर कर पाएंगे, और अगर आप descriptive answer लिख रहे हैं तो उन keywords, उन data को use करें to come up with a good and quality answer. ठीक, done. Is it fine, guys? Shall we conclude? So I will be catching you all in the next session with part 2 on Monday, same time, 2 p.m. Thank you so much. Good luck. God bless you all.